So we can say the pHO and pOH scale. Sir Lawrenson in 1905 proposed a scale for the measurement of strength of acid and bases called pH and pOH scale. The potential to be, we can say, and H plus stands for hydrogen ions and OH minus stands for hydroxyl ions. The P scale measures the acidic or basic nature of the solution. It ranges from 0 to 14. The acidity or basicity of an aqueous solution depends upon the relative number of hydrogen ions and hydroxide ions present in it. So we can say that यहाँ पर पीएचओ और पीओएच स्केल के बारे में बताया गया है कि सोरेंसन सर यानी पीटर सोरेन पीटर एंड सोरेंसन 1909 में इन्होंने एक स्केल जो है ना प्रपोज किया, यानी एसिड और बेसिड की जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, उसको मेजरमेंट के लिए, उसकी पैमाइश के लिए एक स्केल को मरतब किया जिसको पीएच और पीओएच स्केल कहते हैं, पीएच और पीओएच स्केल। सो इसमें जो पी है यानी पीएचओ, पी से क्या मुराद है? प्रोटेंस यानी पोटेंशियल टू बी, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आइंस। और H प्लस का मतलब ये होता है कि ये हाइड्रोजन आइंस है, हाइड्रोजन आइंस। और जो OH है उसका मतलब ये हाइड्रोक्सिल आइंस। पीएच स्केल जो है ये क्या करता है? ये एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशंस को मालूम करता है। यानी पीएच स्केल से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो और ये इसकी जो रेंज है 0 से 14 तक होती है। और अब एसिडिटी या बेसिसिटी जो इक्वल सॉल्यूशन की होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रो ऑक्साइड आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशंस के अंदर जो हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं वो उस पर डिपेंड करते हैं कि उसकी एसिडिटी उस पर डिपेंड करती है, और जो हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं उस पर बेसिसिटी डिपेंड करता है। यानी अगर जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे उतनी एसिडिटी ज़्यादा होगी, जितने कम हाइड्रोजन होंगे उतनी एसिडिटी कम होगी। सिमिलरली जितने ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन होंगे उतनी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, और जितने हाइड्रोक्साइड आयन कम होंगे उतनी बेसिसिटी कम होगी। तो ये अब पीएच अब सोल्यूशन क्या चीज़ होती है? ये डिपेंड करता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन। पीएच क्या चीज़ है? द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यानी सॉल्यूशंस के अंदर जो हाइड्रोजन आयन होंगे उसका अगर हम नेगेटिव लॉग लेंगे तो उससे हम पीएच को मालूम कर सकते हैं। यानी जो पीएच स्केल है, अगर हम कहें कि जो अकॉर्डिंग टू दिस स्केल द पीएच ऑफ वाटर इज कैलकुलेटेड एज पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस। अब अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे लगा दें कि पीएच की जो वैल्यू है वो कितनी होती है। हमने पहले पढ़ा है कि पीएच की जो H कंसनट्रेशन होता है पानी में वो कितना होता है, यानी H कंसनट्रेशन जो होता है पानी का वो हमने पहले वीडियो में पढ़ा है कि वो कितना होता है 1 इंटू 10⁻⁷। सो अगर हम H आयंस की वैल्यू पुट करें 1 इंटू 10⁻⁷, तो ये आएगा माइनस लॉग ऑफ Ph is equal to minus log of the value of hydrogen ion, which is 1 into 10⁻⁷. Ph is equal to minus, तो -7 यहाँ पे आ जाएगा और फिर log 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे log of 10 is equal to 1, तो pH यहाँ पे 7 आएगी, वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी। तो pH of hydrogen ion
क्या है 7, यानी ये हम क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली हम pH ऑफ वाटर को मालूम कर रहे हैं, और pH ऑफ वाटर क्या है 7 हमारे पास आ गया। अब रिलेशनशिप pH और H आयंस के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको हम कैसे मालूम करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास pH जो 7 है, यहाँ पर ये 7 है, तो इसके राइट साइड पे वीक बेस लिखा हुआ है, वीक बेस है और स्ट्रांग बेस है, और लेफ्ट साइड पे वीक एसिड्स है और स्ट्रांग एसिड्स है। यानी अगर हम इस पॉइंट से जाएंगे आगे, इस पॉइंट की तरफ राइट साइड की तरफ जाएंगे जिस तरह ये बताया गया है, तो फिर क्या होगा, pH की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, pH विल इंक्रीजेस। जैसे ये 8 है, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो अब अगर हम यानी तो ये बेसिक सॉल्यूशन होगा, यानी अगर हम जो है ना 7 से ऊपर जाएंगे pH बढ़ेगा, तो ये बेसिक सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होगी वो बढ़ेगी, यानी ये OH आयंस या हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। और अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे, इफ यू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, तो फिर क्या होगी, जो H आयन की जो कंसंट्रेशन यानी pH क्या होगा, pH क्या होगा, रिड्यूस होगा। जैसे कि बताया गया यहाँ पर 6 पे आ गया, फिर 5 है, फिर 4 है, और 3, 2, 1 और 0। तो pH की वैल्यू कम होती जा रही है, इट मीन्स कि जो हाइड्रोजन आयन है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर एक और चीज़ बताया गया है कि ये यहाँ पर pH बढ़ती जा रही है, लेकिन pOH हो यानी यहाँ पर pOH की वैल्यू है 0 से 14 तक, ये क्या है 14 तक है, फ्रॉम 0 to 14। तो अब यहाँ पर इंक्रीजिंग एसिडिटी, इफ pH इज कैन से लेस देन 7, जो pH 7 से कम होती है, जैसे ये यहाँ पर हमारे पास है, तो फिर क्या है इंक्रीजिंग एसिडिटी बढ़ जाती है, और 7 पे अगर है तो न्यूट्रल है। और अगर इंक्रीजिंग बेसिसिटी, अगर pH ग्रेटर देन 7, तो फिर ये क्या होता है, बेसिसिटी क्या होती है, बढ़ती है। यानी अगर 7 से pH कम हो रहा है तो फिर एसिडिटी बढ़ती है, अगर 7 से pH ऊपर हो रहा है तो फिर बेसिसिटी बढ़ती है। So this is the, you can say, this is the pH for different substances or different solutions. We can say this is a pH 14 of 1 molar of NaOH. 1 molar of 1 mole per liter of NaOH solution has a pH 14. So similarly, we can say that this is this. You can say sodium hydroxide. This is a line pH 13, and the household ammonia, which this is a household ammonia, which is a pH 11.9, and milk of magnesia antacid is a pH of 10.5. So similarly, detergent solutions approximately having pH of 10. So this is the ocean water having pH from 7 to 8.3. This is the blood of human having pH of 7.4. And 7 having neutral pH, so this is a neutral point. So if we are going below 7, we see that milk has pH 6.4, urine has pH 4.8 to 7.5. Similarly, rainwater has pH 5.6,
and tomatoes has pH 4.2, vinegar has pH 2.4 to 3.4. So you can say that the other pH values are also given. So the lemon has a pH 2.2 to 2.4, and you can say stomach acid present in stomach has pH value 1, which is stomach acid is mainly HCl and having a pH of 1 to 3. So similarly, 1 mole of HCl has a pH of 0. 1 mole of HCl solution has pH of 0. So we can say that basic solution, what is basic solution? If hydrogen ions concentration is less than OH ion concentration, the solution will be basic. अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किसी सोल्यूशन में OH आयन की कंसंट्रेशन से कम है तो फिर ये सोल्यूशन क्या होगी? बेसिक सोल्यूशन होगा। यानी अगर OH कंसंट्रेशन ज़्यादा है आयन्स तो फिर सोल्यूशन बेसिक होगा, अगर H आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो फिर एसिडिक होगा, अगर दोनों बराबर है तो सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। जैसे यहाँ पर दोनों बराबर है HO तो ये सोल्यूशन क्या है? न्यूट्रल है। So this is a neutral. So we can say this is acidic solutions having hydrogen ion concentration greater than OH ion concentration. And this is the, you can say, acidic solution. Now, the pH of solutions is defined as similarly the pOH is the negative logarithm of the molar hydrogen hydroxide and concentration OH. So अब यानी कि जो pOH है वो क्या है? pOH क्या चीज़ है? ये negative logarithm of the hydroxide concentration. So this is pOH. So one minus log of hydroxide and concentration. So if you put we know that the value of OH is equal to 1 into 10 power minus 7. So if you put this value, you will get pOH equal to minus log of 1 into 10 power minus 7. So 10 minus 7 will be come here. So minus 7 log 10 and log 10 is equal to 1. So in this case pOH will be equal to 7. So a neutral solutions at 25 degrees Celsius has a OH of 1.0 into 10 power minus 7 molar. So we can say therefore the OH the pOH is 7. Remember that the value of H and OH are related by Kw. So we can say that the negative logarithm of Kw at 25 degrees Celsius is 1 into 10 power minus 14 is 14. So you may have noticed that the sum of the pH and pOH of a neutral solution at 25 degrees Celsius is equal to 14. So the following relationship is true at 25 degrees Celsius. For neutral solutions, pH plus pOH is equal to 14. So you can see, we know that pH is equal to 7, pOH is equal to 7, so that will be equal to 14. So therefore, you can say that pH plus pOH is equal to 14. So it justifies that 7 is equal to 14. So at 25 degrees Celsius, the range of pH values of aqueous solution generally falls between 0 to 14. So we can say this is the table of a range of some common materials at 25 degrees Celsius. So this is materials at pH. Suggested juice has a pH of 1 to 3. Similarly, lemon has a pH of 2 to 2.4. We can say that similarly you can see the other values also.
and pure water has a pH 7. You can say it aches a pH 7.6 to 8.5. So we can say that tomato has pH 4 to 4.4, and similarly milk of magnesia has pH 10.5. So now has given the explanation stomach acidity. So you can say during the digestion process, various organs secretes numerous enzymes which helps in digestion. Stomach stomach secretes gastric juice. अब यहाँ पर बताया गया कि जो यानी डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान जब इंसान के मैदे में डाइजेशन हो रही होती है तो मुख्तलिफ जो ऑर्गन होते हैं वो किस तरह तरह के एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं जो खुराक की जो हाजिम में मदद देती है। तो जैसे कि स्टोमिक और गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करता है। तो ये क्या है गैस्ट्रिक जूस, ये बेसिकली HCl होता है जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसकी pH 1 से 2 तक होती है, which the pH has a pH of 1 to 2. In addition to that, it contains potassium क्लोराइड। इसके अलावा ये पोटेशियम क्लोराइड भी इसमें होता है और इन सोडियम क्लोराइड भी इसमें होता है। तो द डाइजेस्टिव फ्लूइड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बाय एक्टिवेटिंग डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो डाइजेस्टिव फ्लूइड है जो इसमें HCl होते हैं, KCl और NaCl, ये प्रोटीन जो है ना उसकी डाइजेशन में बहुत अहम किरदार अदा करती है। प्रोटीन से मुराद ये कि जैसे हम गोश्त खाते हैं तो उसमें प्रोटीन होता है, तो उसकी जो डाइजेशन है उसमें उसका अहम किरदार होता है, यानी कि जो फ्लूइड होता है जिसको हम HCl बोलते हैं इसका अहम बड़ा रोल होता है। तो सिमिलरली वी कैन से दैट sometime when we take food which are rich in acids such as fats and proteins which are composed of fatty acids amino acids, they cause stomach acidity. बाज़ वक़्त हम फैट्स वगैरह जब खाते प्रोटीन तो वो स्टोमिक एसिडिटी का मसला बन जाता है, तो जिसको हम कहते हैं हाइपर एसिडिटी, यानी कि एसिडिटी बढ़ जाती है। तो उस सूरत में इन दिस केस वी कैन से मेडिसिन सच एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विच आर वीक बेसिस आर यूज्ड एज एंटासिड। तो उस सूरत में फिर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल करते हैं, जिस जो क्या करते हैं जो वीक बेसिस है जो कि एंटासिड के तौर पर काम करता है। और ये जो एंटासिड्स हैं ये जो हम लेते तो फिर उसकी pH 10.5 तक चली जाती है, तो फिर ये पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है इस सूरत में। सो वी कैन से so we feel from feeling of we feel comfort from feeling of burning of stomach. So the patient feel comfort in this case when he take the milk of magnesia. So we can say now this is the example. Calculate the pH and pOH of 0.001 molar solution of nitric acid. This is the nitric acid. When you put it in water, so in aqueous solution it dissociates to give H ions and 3 ions. So if we have 0.001 molar solution of nitric acid, and it will dissociate in aqueous solution to produce 0.001 molar of H ions and 0.001 molar of nitrate ions. So hydrogen ion concentrations we know that that is 0.001. So if we write 1 by 1000, that will be equal to 10 raised to the power minus 3. So we know that pH is equal to minus log of H ions. So putting the value of H, which is this one, this is this value. This is so we see that pH is equal to minus log of 10
raised to power minus 3. So pH is equal to minus 3 log of 10. Log of 10 is equal to 1. So pH is equal to 3. So we can say that pH plus pH is equal to 14. We know that pH, if we put the pH of value, which is 3, so in this case pH will be equal to 14 minus pH, and 14 minus pH is equal to 3, so it will get 11. So pH is equal to 11. Now another example is to calculate the pH of a 0.01 molar solution of potassium hydroxide. KOH will dissociate into potassium hydroxylase. So we can say that KOH we have 0.01 molar and dissociate to produce 0.01 and 0.01 molar. pOH is equal to minus log of OH. We know that putting the value, it will give pOH minus log of 10 minus 3, 10 into minus 2. So pH will be equal to minus 2 minus 10, pH is equal to 2, because log of 10 is equal to 1. Now we can say to calculate the value of pH, we can say pH will be equal to 14 minus pOH. So pH is equal to, we have 14, or pH value 2, so 14 minus 2 will be equal to 12. So the pH will be equal to 12. Now you can say that neutral acids and basic solutions, when the concentration of hydrogen and hydroxide ions are equal in solutions, as in pure water, it is called neutral solutions. Thus, any solutions in which H is equal to OH is neutral. So we know that H and the OHO of neutral solutions at 25 C are equal to 1 into 10 power minus 7. So H is equal to OH is equal to 1 into 10 power minus 7. So acid increase the concentration of hydrogen ions in aqueous solutions. Solutions in which the concentration of hydrogen ion is greater than the concentration of hydroxide ions are called acidic solutions. When H ion is greater than 1 into 10 power minus 7, the solution is acidic. जब solution में ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जब OH आयन ज़्यादा होंगे solution में, यानी अगर 1 into 10 power minus 7 से ज़्यादा है तो solution क्या होगा, acidic होगा. और अगर solutions में अगर 10 amount, अगर quantity 1 into 10 power minus 5 molar of H है, तो PD क्या होगा, concentrations acidic, ये भी acidic होगा, because 1 into 10 power minus 5 is greater than the 1 into 10 into raised to power minus 7. So we can say that this value is greater than this. So when OH is greater than 1 into 10 power minus 7, the solution will be basic. Basis increases the concentration of hydroxide ion in aqueous solutions. In basic solution, the concentration of OH ion is greater than the hydrogen ions. बेसिक सोल्यूशन में OH आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है H के मुकाबले में, यानी H आयन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, OH के आयन की कंसंट्रेशन कम होती है. Therefore, solutions containing 1 into 10 raised to power minus 4 mole OH at 25 is basic because 1.5 is greater than 1 minus 1 into 10 power minus 7. So we can say, so
this is the, because this is the basic stage, neutral stage. So if the this is we can say OH ion concentration is if this, so this value is greater than this, so we can say the solution will be basic. Now this is the A and B solutions, A solution. So we can say that this is A. Addition of HCl in a water increases H ion concentrations, which is shown by the color change of the indicator bromothymol blue to yellow. So this is, you can say, this is solutions if we add HCl. If we add HCl, so the color will change from blue to yellow by the addition of HCl. And the solution has bromothymol indicator. Similarly, addition of sodium hydroxide to water increases the OH concentrations, which is shown by the color change of the indicator phenolphthalein terpene. If we are going to increase OH ions of these solutions, this is the addition of OH ions, we can say NaOH, NaOH. So by addition of NaOH, we can say that we are going to increase the concentration of OH ions, and the solutions will turn to pink. So this is a pink color. This is a pink color due to phenolphthalein, because the solution has high concentration of OH ions. So this is the indication of OH and H ions concentration in solutions. Next one is neutralization reactions. So neutralization is the chemical reactions in which an acid and a base react with each other to form water and salt. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? वो रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर जाते हैं तो उसके नतीजे में साल्ट और वाटर बनाते हैं. यानी अगर हम ये जिस तरह हमें एग्जांपल दिया गया है HCl और this is acid and then which is a base, so it combine together to form salt of sodium chloride and water. So this is the acid and this is the base, and this produce, when they mix together they produce sodium chloride, which is a salt, and water. So this is called neutralization reaction. This is the neutralization reaction. So an acid-base reactions occur in aqueous solution between hydrochloric acid and sodium hydroxide. The equation for this reaction is written as, so you can say in aqueous solutions containing 1 mole of sodium hydroxide dissociate into hydrogen. So you can say this is the NaOH, and in aqueous solution it dissociates into sodium ion and hydroxide ions. So similarly, solutions containing 1 mole of HCl will dissociate in aqueous solution to produce H ions and Cl ions. If the two solutions are mixed together, reactions occur between the aqueous ions. Notice that sodium chloride and water are produced. The overall reaction is, you can say that it's the HCl, this is sodium hydroxide. When it combined together, this is the case with this reaction. You can say, if you see this reaction, and now this is the same. You can say this. So this is the HCl and this is the NaOH, like this one. So it form sodium chloride, which is this one, and water, which is
this one. So this is the neutralization reaction between acids and bases to produce sodium, salts and water. So now this is given that when aqueous hydrochloric acid reacts with aqueous sodium hydroxide, the reaction produces aqueous sodium chloride and ions that are present in each solutions. This is the given about neutralization reactions. Now, so yes, they appear on both sides of the oral reaction. Sodium and chloride ions are called spectator ions. The only participant in the reactants are the hydrogen and hydroxide ions. So HO and OHO are the reaction takes place between H ions and OH ions to produce water. So the remaining, we can say the sodium and chloride are, can say spectator ions. So this is the reaction between H and OH. This is from acid side, this is from base side, and so you can say acid and base react to each other to produce water. So there are an equal number of H and OH ions in this reaction, so they are fully converted to water. So in aqueous solution, neutralization is the reaction of hydrogen ions and the hydroxide ion to form water molecule. So this is the you can say neutralization reaction. Now next one is salt. What is salt? So you can say a compound formed due to the neutralization reaction of an acid and base is called salt. यानी वो कंपाउंड जो एसिड और बेस की रिएक्शन से बनता है उसको हम कहते हैं सॉल्ट्स। यानी जिस तरह ये हमने पढ़ा है कि ये हमारे पास सॉल्ट ये रिएक्शन है, ये सॉल्ट है, दिस इज सॉल्ट। तो ये क्या, ये एसिड और बेस की, ये एसिड है और ये बेस इसकी रिएक्शन से जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, salt. So the compound formed by the combination of acids and base, that is called a salt. Salt consists of positive ions from the base sides and negative ions from the acid sides. For example, sodium chloride is composed of sodium's positive ions and chloride. This is a non-metal chloride. So some metal positive ions are sodium, potassium ions, silver, magnesium, and calcium. Similarly, from you can say from non-metals, some negative ions are chloride ions, bromide, sulfate, and phosphate ions. So some chloride, sodium chloride, I can say, silver bromide, potassium sulfate, and ferric phosphate are example of the salts. So now properties of salts. There are two types of salts: soluble salts, insoluble salts. So preparation of soluble salts. Soluble salts can be prepared by 4 different methods, whereas soluble salts have only one preparation method. In soluble salt को हम different तरीके उनके बनाने की, जबकि जो insoluble salt है उनका एक ही तरीका है बनाने का। तो soluble salt से क्या है, वो उसको हम पानी में बनाते हैं। Soluble salts are usually prepared in water. Therefore, these salts are covered by evaporation of crystallization processes. So you can say
सॉल्युबल सॉल्ट्स को हम यानी कि डिफरेंट तरीके से और इनसॉल्युबल को हम एक तरीके से प्रिपेयर करते हैं. So in this method, you can say that by the action of an acid and a metal, so this is the direct distillation method. In this method of preparation, hydrogen ion of an acid is replaced by a negative by a reactive metal to produce respective salts and hydrogen ions, for example, magnesium, calcium, and zinc. So this is, you can say, this is the acid, so magnesium metal. So it reacts with an HCl to produce magnesium chloride and hydrogen ions. Another is by the reaction of an acid and base neutralization reactions. The salts are produced by the reaction of acid and base. In case of acid, HCl, and from base, case of base is NOH, so it reacts with each other to form sodium chloride, which is a salt, and water. Next one is by the action of an acid and metallic oxide. So this is you can say sulfuric acid, and this is calcium oxide. So calcium oxide. So the metallic oxides, you can say calcium oxide. Here is given calcium oxide, and so it's copper oxide. The calcium oxide reacts with dilute acid to form salts and water. So acid, sulfuric acid, and calcium oxide react to each other to form calcium sulfate. This is a salt. And another is by the method is by the action of an acid carbonate. So dilute acids reacts with metallic carbonates such as sodium carbonate or metallic or hydrogen carbonate, sodium bicarbonate, to produce salt and water. So and carbon dioxide also. So you can say this HCl reacts with sodium carbonate. This is, we can say, acid. This is a base to produce salt, sodium chloride, water, and carbon dioxide. So, or we can say the HCl and sodium bicarbonate react with sodium chloride, H2 and CO. Now, next one is preparation of insoluble salts. Precipitation method. Insoluble salts are usually obtained during a chemical reaction. Solution of soluble salts are mixed and as a result of insoluble salt is formed. In the reactions, exchange of ionic radicals, say metallic radicals of salts takes place, and two new salts are produced. One salt is soluble and the other is insoluble. The soluble salt precipitates at the bottom of the solution. So you can say ये बता रहे हैं कि अगर हम सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को आपस में मिक्स करें तो ये क्या है, इनसॉल्युबल्स यानी इनसॉल्युबल साल्ट्स की जो प्रेसिपिटेशन मेथड है, तो क्या होगा अगर हम सोडियम नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को मिक्स करें तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा और सोडियम नाइट्रेट बनेगा. तो इसमें से एक सॉल्युबल है और दूसरा जो है ना इनसॉल्युबल है. तो इसमें से जो सिल्वर क्लोराइड है ये इनसॉल्युबल है, तो ये बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा. तो दूसरा जो है ना ये, तो इसी तरह ये सोडियम कार्बोनेट अगर हम कॉपर सल्फेट को मिक्स करेंगे तो कॉपर कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट बनेगा. Now next one is type of salts. What are type of salts? Types of salts. The main types of salts are neutral acids, salts, acidic salts, and basic salts. So first one is neutral salts. These salts are formed when the hydrogen sign of an acid are completely replaced by the metal ions, are a group of atoms behaving like metal ions. Usually, a neutral salt is formed when a strong acid or and a strong base is neutralized
in the reaction. For example, sodium chloride is formed by the sodium hydroxide and HCl. तो ये बता रहे कि न्यूट्रल जो साल्ट है ये क्या चीज़ है, तो ये यानी ये तब बनते हैं जब एसिड का जो हाइड्रोजन आयन है वो मुकम्मल तौर पर रिप्लेस हो जाए किसी मेटल आयन्स के साथ, तो उस सूरत में फिर क्या बनता है, जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास जो HCl है ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और यहाँ पे बेस है, तो ये सोडियम जो है ना मेटल है, तो सोडियम जो है ना इस हाइड्रोजन को, ये सोडियम मेटल है इन केस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें जो सोडियम है ये क्या करता है, ये मेटल ये हाइड्रोजन आयंस को मुकम्मल तौर पर, यानी सोडियम आयंस हाइड्रोजन आयंस को मुकम्मल तौर पर HCl से रिप्लेस करता है, तो उसके नतीजे में क्या बनता है, HCl NaCl बनता है, यानी NaCl जो एक साल्ट है ये न्यूट्रल साल्ट बनता है फिर। तो so these salts are formed by the when the hydrogen ions of an acid is completely replaced by the metal ions or a group of atoms. So this is the metal ions, sodium. It replaces the hydrogen ion completely from HCl. So as a result, we obtain sodium chloride, which is a neutral salt. Now, next one is here is given example. So for example, NaCl is a neutralization product of HCl, which similarly potassium sulfate, sodium sulfate, sodium carbonate, ammonium sulfate, sodium phosphate are other example of normal salts. So next one is you can say acidic salts. So acidic salts, so salts formed when hydrogens ions of an acids are partially replaced by the metals. A group of atoms behaving like metals ions are called acidic salts. So acidic salts कौन से होते हैं, जो वो salts जब ये तब बनते जब हाइड्रोजन HCl का जो हाइड्रोजन आयन है वो पार्शली रिप्लेस हो जाए किसी मेटल आयन, यानी कोई मेटल आयन HCl से जो हाइड्रोजन आयन है वो पार्शली रिप्लेस कर ले, तो उसके नतीजे में जो बनने वाले साल्ट है उसको एसिडिक साल्ट्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, so in this case potassium bisulfate, and so we can next to potassium bisulfate plus KOH again to produce potassium sulfate and water, so partially replaced by metal ions or group of ions like metals ions, acidic salts. So you can say that this is an the acid. So KOH has replaced we can say KHSO4. KHSO4. So we can say that in sulfuric acid has two hydrogen. Sulfuric acid has two hydrogen. It's containing H ions, so one, second, and HSO2SO4. So this is the sulfate ions. So in this case, we can say the potassium, this potassium replaces one hydrogen to produce KHSO4 and this sulfate. So in the first reaction, we can say the potassium is a metal replaces one hydrogen and sulfate ion to produce KHSO4, and you can say and this OH ions
is replaced by the OH ions in case of KOH. OH ions in case of KOH. So in KOH, these OH ions react with these hydrogen ions to form water. So now we have seen that the hydrogen ion of H2SO4 is partially replaced by the metal ions. So this is called acidic salts. So you can say in the next reaction, when more KOH is reacted with the KHSO4, so we see that another KOH ions replaces the, you can say, cannot replaces this hydrogen ions. In the KHSO4, this hydrogen is not replaced by metal ions. I can say it's again replaced by the OH of OH ions. In case of KOH, you produce H2O. So you can say in these two reactions, the only one hydrogen of sulfuric acid is replaced by the potassium metal, or we can say the two hydrogens cannot be replaced. The two hydrogen of sulfuric acid cannot be replaced by the two potassium ions, but we can say only one hydrogen of sulfuric acid is replaced, and we can say partial hydrogen ion of H2SO4 is replaced by potassium ion. So we can say that the salts which are formed when hydrogen ions of an acid is partially replaced by the metal ions. So this is partially replaced because in case of sulfuric acid has two hydrogen ions and only one hydrogen ion is replaced by the metal ion. So therefore this is called acidic salts. Next one is salts form basic salts. Salts form an OH ion of base are partially neutralized by an acid called basic salts. For example, this is an example of basic salts. So lead hydroxide reacts with HCl to produce lead pBOHCl plus H2O. So we can say the OH ions of a base are partially neutralized. So the pBOH has two OH ions. So we can say in this case hydrogen can neutralize in HCl. Hydrogen can neutralize only one OH. So and the one is you can say pBOH Cl. So PbOH2 has Pb. You can say it has two OH ions, one and OH ions second. So two OH ions, the one OH ion is replaced, reacted with the H of HCl. So we can say, and this Cl reacts with you can say this one and this one, so produce pBOHCl plus H2O. So in this case, OH, only one OH is replaced by the hydrogen ions. Yeah, we can say partially replaced too. So therefore, salts form when OH ions of base are partially replaced. The OH ion is partially replaced. Partial means that instead of two OH ions, only one is replaced. So this is the partial replacement of OH ions. So these are called basic salts.
Basic salts are produced by polyacid bases. Now, uses of salts. Some salts. Salts are used in different ways, ranges from household to industry. Sodium chloride is necessary for human life. Calcium phosphate is the main component of bones. Some salts and their uses are given below. These are the salts and their uses. You can say this is sodium chloride. Sodium chloride is used for seasoning and preventing food industry, preserving food in industry. It is used as a basic raw material for the extraction of sodium metal, preparation of caustic soda, washing soda, and Na2CO3. One of the major application of sodium chloride is the de-icing of roadways in sub-freezing weather. सो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की जो इस्तेमाल बताया गया है कि ये सोडियम क्लोराइड जो है ये हम खुराक को ज़ख़ीरा करने के लिए ताकि फूड या खुराक जो हम ज़ख़ीरा करते हैं वो ख़राब ना हो उसकी प्रिजर्वेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इंडस्ट्री में जो सोडियम क्लोराइड है उससे हम सोडियम मेटल बनाते हैं। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH की प्रिपरेशन में इस्तेमाल होता है। सिमिलरली वॉशिंग सोडा की तैयारी में यानी कि जो सोडियम कार्बोनेट है इसकी तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। और एक मेन जो सोडियम क्लोराइड की है वो जो इस्तेमाल है de-icing ऑफ रोडवेज यानी जो सड़क के ऊपर बर्फ़ पड़ी होती है तो उनको हटाने के लिए हम सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम आइसक्रीम को फ्रीज करने के लिए भी सोडियम क्लोराइड को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सोडियम कार्बोनेट इज आल्सो नोन एज सोडा ऐश और washing soda. Sodium carbonate is used in laundries as a cleaning agent and as a water softener. It is used as a raw material in the glass manufacturing. It is also used in paper, petroleum refining and leather industry. तो सोडियम कार्बोनेट जो है ये इसको सोडा ऐश कहते हैं या वॉशिंग सोडा। तो सोडा ऐश वॉशिंग सोडा तो सोडियम कार्बोनेट जो है इसको लॉन्ड्रीज में हम इस्तेमाल करते हैं क्लीनिंग पर्पजेज के लिए। इसके अलावा सॉफ्टनर वाटर सॉफ्टनर यूज़ करते हैं एज ए रॉ मटीरियल ग्लास की जो शीशे की ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में, पेपर इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम इंडस्ट्री रिफाइनिंग में और लेदर इंडस्ट्री में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन इज सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का जो इस्तेमाल है यानी साल्ट है जो सोडियम सल्फेट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, डिटर्जेंट्स एंड ग्लास। तो ये हम पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में, डिटर्जेंट्स और ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट is also as baking soda is used in the preparation of cake and other confectionaries. Is also used as a medicine, the antacid as a toothpaste. So सोडियम कार्बोनेट को हम इन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको बेकिंग सोडा भी हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट को, बाइकार्बोनेट को। और ये केक्स वगैरह और अदर
केक्स एंड बाकी जो कन्फेक्शनरी, इसके अलावा इसको हम ना एंटी एसिड और टूथपेस्ट वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट वन इज पोटेशियम नाइट्रेट. Potassium nitrate it is used as a fertilizer and for the manufacture of flint glass. फ्लिंट ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में हम और फर्टिलाइज़र में हम इसको इस्तेमाल करते हैं. तो नेक्स्ट वन इज कैन से potash alum and alum can say potash alum or alum. So it is used in the purification of water to remove suspended impurities and is a blood coagulant. So this is this use of potassium. Next one is calcium sulfate. Calcium sulfate, you can say, is commonly known as gypsum. It is used in a fertilizer in the preparation of plaster of Paris and cement industry. तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है इसको हम जिप्सम कहते हैं और ये क्या होता है फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल होता है. इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस को और सीमेंट को बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम सल्फेट को. इस तरह कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये भी हम सीमेंट की और सिरामिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट है या इसको एप्सम कहते हैं. मैग्नीशियम सल्फेट को हम एंटी एसिड एज ए लेक्सेटिव इस्तेमाल करते हैं. साल्ट इशूज या डाई इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट वन इज कॉपर सल्फेट. Copper sulfate is used for copper plating in electroplating process. The salt is also used to kill algae in water reservoirs. It is also used in the agriculture frame. तो ये इनका these are the salts and its uses. These are the key points. And we will discuss these key points in next. We choose it next video. Thanks for watching.